एनालिटिक्स यूट्यूब चैनल। रिसेंटली कुछ इंटरेक्शन के बाद, कुछ लोगों से मिलने के बाद आई अंडरस्टूड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इन अंडरस्टैंडिंग द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, skills required by a business analyst in 2024. So here I'm going to make this video very short, crisp, but full of content to let people understand. The one who watches this video will definitely be able to understand the roles, responsibilities and the skills required by a business analyst in 2024. Let us start from scratch. So as the name suggests, business analyst, right? So it's a task in which we have to analyze the business, analyze some situations, analyze some criteria, and accordingly give some recommendations to the client, to the stakeholders, to the management team, right? Just for an example, if someone wants to launch a new product, if someone wants to update some product, if someone wants to expand to a different city, a different country or a different state, something like that, then they might want to discuss with the business analyst or such teams like whether they should do that or not, how should they proceed, what should be the strategies and everything, right? So in these scenarios, a business analyst or their team must try to do the research and must try to actually research, gather point and give the clients recommendations, actually data driven recommendations, right? So this is in general the meaning or the roles or role of a business analyst. So first let us understand about the types of questions an interviewer asks generally in 2024 for a candidate who is appearing for business analyst interview. So there might be a few type of questions. I categorize generally them into two categories. First is technical questions. Second is case study or some research type of questions. First is like if I talk about the technical questions, right? So they might be interested to know about your previous roles and responsibilities, your skill sets, like which tools are you well versed with. For example, Power BI, Excel, Tableau, SQL, right? So these are some tools which we use as a business analyst in our day-to-day tasks, right? So for example, SQL is used to get the data. Power BI and Tableau are data visualizations tools using which we create high-end visualizations, reports and dashboards. Which are used by C-level executives or the management to understand the data very clearly and take decisions, right? Second is like case study type of questions and some like personal questions also, right? About like for example case study related to like recently I was facing an interview and they asked me like agar Zomato ki sales, if the sales of Zomato, a food delivery company, is going down from last quarter, what could be the probable hypothesis, how would you approach this problem, correct? So इससे related already एक video YouTube channel के ऊपर मेरे पड़ा हुआ है, right? So you can watch that video to understand the solution, to understand the approach to this problem, right? So these are a few type of questions which they ask you, right? To understand your viewpoint, to understand your research and development skills, to understand your problem solving approach actually, correct? So apart from this, अगर इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए when we are preparing for a data business analytics interview, business analyst interview. सबसे पहली चीज है लाइक मार्केट साइजिंग केस स्टडीज, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइज इन द पर्टिकुलर एरिया, सिटी, स्टेट, रीजन और कंट्री और वर्ल्ड वाइड, राइट? मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज, मार्केट साइजिंग केसेस, प्रॉफिटेबिलिटी केसेस, मर्जर एंड एक्विजिशन केसेस, सेल्स रिलेटेड केस स्टडीज, right? Product launch case studies, product updation case studies. So there are lots of types of case studies, right? Like for an example, अगर जैसे मीशो की बात कर ले, right? So मीशो a clothing brand, like let's say they observe that there is a decline in the sales from the last 6 months in some category, for example traditional wear or western wear. What could be the probable reasons? जियो ने सडनली प्राइस इंक्रीज कर दिए, राइट? तो कुछ उसके पीछे बहुत सारी एनालिसिस रही होगी, तभी कोई कंपनी इतना बड़ा डिसीजन लेती है और एक सडन प्राइस इंक्रीज या कुछ करती है, डिसीजंस लेती है. सो दैट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट एंड दिस वी हैव टू फिगर आउट, राइट? अब कई सारे लोग जब हम लोग ये चीजें प्रिपेयर करते हैं, मेनी पीपल आस्क मी लाइक हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर दीज, लाइक हमारा इतना एनालिटिकल माइंड नहीं है, हमारा इतना रिसर्च में माइंड नहीं चलता है, वी कैन नॉट थिंक थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, राइट? सो मेरी कुछ रिकमेंडेशंस है जो पर्सनली मेरे को बहुत हेल्प करा है. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव दैट सेम रिकमेंडेशंस टू यू गाइस. लाइक
रीड बिजनेस केस स्टडीज, वॉच बिजनेस शोज, वॉच यूट्यूब पॉडकास्ट, राइट? जैसे जोमेटो के फाउंडर के साथ कोई पॉडकास्ट है, या किसी भी XYZ स्टार्टअप के फाउंडर्स के साथ, या किसी C-लेवल एग्जीक्यूटिव के साथ, या जिसने लाइफ में कुछ फोड़ा है, ऐसे लोगों के साथ अगर आपका जो ऐसे लोगों के साथ जो पॉडकास्ट पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, उसको देखना चाहिए, उससे काफी अंडरस्टैंडिंग मिलता है। शार्क टैंक इज अ वेरी पॉपुलर शो इन इंडिया एंड द US ऑल्सो। सो वो एक बहुत अच्छा शो है जहाँ पर हमें बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करने में काफी हेल्प मिलती है, करेक्ट? सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशन जहाँ से हम लोग चीजें सीख सकते हैं। Apart from these case study questions, I would also recommend you to understand the guesstimate questions, right? For example, जैसे मैंने जब एक इंटरव्यू फेस करा था, तो दे आस्क्ड मी कि एक कॉलेज एरिया के पास अगर एक लिकर शॉप है, तो हाउ मेनी बियर कैंस आर टू बी सोल्ड पर डे, अप्रोक्सीमेशन, एक गेस्टिमेट लगाना था, राइट? एक ने पूछा था कि लाइक अगर हम आपके देहरादून की बात करते हैं, लाइक करेंटली आई एम लिविंग इन देहरादून, राइट? सो व्हाट आर द नंबर ऑफ ओला एंड उबर टैक्सीज करेंटली ऑपरेटिंग इन देहरादून? सो ऐसे कई टाइप के गेस्टिमेट क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ केस स्टडीज प्रेजेंट ऑन गूगल, इंटरनेट, एंड आई ऑलवेज से इंटरनेट इज अ फ्री यूनिवर्सिटी इफ वी यूज इट वाइजली। सो काफी कुछ हमें वहाँ पर हेल्प मिल सकती है। सो केस स्टडी के बाद, गेस्टिमेट क्वेश्चंस के बाद, हमको अपनी एनालिटिकल केस स्टडीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, करेक्ट? सो दीज आर सम थिंग्स विच वी नीड टू प्रिपेयर। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं दो चीजें एक 2-3 चैनल्स भी आपको रिकमेंड करूंगा जिससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। एंड इट इज नॉट अ पेड शाउट आउट, बट या बहुत अच्छे लगते हैं, जेन्युइन कंटेंट लगता है, तो दैट इज व्हाई आई विल शेयर। बट बिफोर दैट, let us also understand the day-to-day role of a business analyst, right? So see, जब भी हम लोग काम करने जाते हैं, तो कुछ एक स्टेप के अंदर अगर मैं अपने रोल्स को डिफाइन करूंगा, तो द फर्स्ट स्टेप विल बी लाइक रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट एंड कोर स्टेप ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट, कोर टास्क ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। कोई भी क्लाइंट, कोई भी स्टेक होल्डर, फाउंडर, मैनेजर, C-लेवल एग्जीक्यूटिव अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, कोई रिक्वायरमेंट लेकर आ रहा है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, दैट रिक्वायरमेंट वेरी वेल। उसके लिए हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। वो चीजें हमें क्वेश्चन आंसर करके और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिलेवेंट डेटा है, हमें वो निकालना होगा। सो कुछ डेटा हमें डेटा एनालिस्ट देगा, कुछ डेटा हमें मार्केट से निकालना पड़ेगा, कुछ डेटा हमें अज्यूम करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी, कुछ हमें खुद रिसर्च करना पड़ेगा, right? After gathering all the required and relevant data, the third task of a business analyst will be to summarize the data, to generate insights from that data. और इसी insight generation के लिए हमारे लिए SQL यूज हो सकती है, क्वेरीज लिख करके डेटा निकालने के लिए और उससे कुछ insight जनरेट करने के लिए, या फिर पावर BI, टैबलू, एक्सेल जैसे टूल्स यूज हो सकते हैं विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, जहां पर हमको insight जनरेट करनी होगी उस डेटा से। And at the end, the major task will be to present that insight in a very easy to understand manner. Like अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा है, वो डैशबोर्ड या वो रिपोर्ट देख रहा है, तो he or she should be able to understand it very easily. तो एक बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन को तैयार करना, whether you can use PowerPoint or any visualization tool, it's up to you, but it should be very easily very presentable and easily understandable, right? So these are some of the roles of a business analyst which जो हमें अपने day to day task में use करना होता है। And so yeah, at the end, जैसे मैंने कहा कि कुछ YouTube channels, तो एक like one channel is on YouTube with the name BA Professional, and that's a very good channel, वहाँ से मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है। And the other channel is ऋतिक मिलावत, right? So वो भी एक बहुत अच्छे बिजनेस एनालिस्ट रहे हैं, एंड ही ऑल्सो टीचर्स वेरी वेल। सो आप लोग इन चैनल से भी काफी कुछ सीख सकते हो, राइट? सो एट द एंड, अगर लाइक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड तो प्लीज शेयर दिस विद पीपल हु आर preparing for business analyst role in 2024. This might help to them or for preparing about those interviews, right? So that's all about this video. I hope आपको अच्छा लगा होगा. If you like this video, like the video, share it, and do subscribe the dataholics YouTube channel. और बहुत सारे और भी valuable content we will try to put it very soon on the channel. तो मिलते हैं.